हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। सी प्लस प्लस की इस कंप्लीट जर्नी में आज हम लोग सी प्लस प्लस की पहली वीडियो के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर योर प्लेसमेंट प्रिपरेशन, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। आज की वीडियो में हम लोग सी प्लस प्लस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स फंडामेंटल्स को देखने वाले हैं। यदि आपका फंडामेंटल्स, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स यदि आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप इस प्रोग्रामिंग जर्नी में आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, बिकॉज आई एम द वन हु फेस अ लॉट ऑफ इश्यू regarding the fundamentals and the basic concepts, low level and a high level. So आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि हमारा ये जो C++ है ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, आइदर लो लेवल और हाई लेवल। सो ये जानने से पहले चलिए हम लोग बारी बारी से दोनों लैंग्वेज को जानने की कोशिश करते हैं। असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज ये दोनों लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आती है। सो ये जो लो लेवल लैंग्वेज है ये मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज है, मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज है। बारी बारी से जानते हैं असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज को। असेंबली लैंग्वेज जो है वो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स है, लाइक 010000 लाइक दैट। सो लाइक इफ योर नेम इज रोहित, तो रोहित कैन बी रिटन in a assembly language in a way like 00100010 like that. I'm not saying exactly that it would be written in assembly language in a way, but let us assume. So it's very difficult to remember. So the syntax of a assembly language is very difficult. So now machine language. In machine language there is instructions, like in order to add something we are using add instruction, in order to subtract something we are using subtract instruction, in order to multiply something we are using multiply instruction, in order to move something we are using move instruction. Same with machine language. The syntax of a assembly language as well as machine language is very difficult. It's a very tough task for a human beings in order to remember all these instructions and the binary code. Here high level language came into the picture. So high level language. All nowadays all the programming languages like C, C++, Python, Java, JavaScript, all are high level language. So what is the disadvantages of a low level language? First, syntax is very complex or difficult. It is tough to remember for human beings, and it's also time consuming. सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा C++ जो लैंग्वेज है वो हमारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिस तरह मैं अभी आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ये एक मीडियम इंटरेक्ट करने का, लाइक मैं आपसे हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे मैं इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। उसी तरह यदि आपको कंप्यूटर के साथ आपको इंटरेक्ट करना है तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। सो C++ इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस, अब हम लोग ये जानने वाले हैं कि ये स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज और ये डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज होता क्या है। हमारा ये जो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है या ये डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। ये जानने से पहले आइए जानते हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टैटिकली टाइप्ड एंड अ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, वी हैव टू डिक्लेयर वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट। यहाँ पे क्या है, नो नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट। ये क्या होता है, ये होता है फास्टर, ये होता है स्लोअर। वी हैव टू डिक्लेयर वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट। ये यहाँ पे डेटा टाइप की बात कर रहा है। इसे हम थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लाइक हमारा C++, जावा ये स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज के अंडर आता है। हमारा ये जो
पाइथन है, ये डायनेमिकली के अंदर आता है। अब हम इसे एग्जांपल के थ्रू थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। इंट एज इज इक्वल टू 10 and if you want to print this age, so we have to simply write print age, but in dynamically typed age is equal to 10 print age. No need to declare the data type. Here int is a data type. No need to worry regarding what is data type, what is variable, because I will cover all these things in upcoming videos. So here int is a data type which defines which type of data this variable is using. So it's int. And friends, always keep in mind, always give a proper name of a variable. Don't give a random name like a b c. So here I am declaring age, so give a proper name, don't give a random name. So we have to declare variable before using it, so it's a int age is equal to 10 print age. So here in dynamically type, no need to declare the data type, simply we can print age and we get the output is equal to 10. Here also we get the output is equal to 10. या सो आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सो लाइक व्हाट इज कीवर्ड्स, व्हाट इज वेरिएबल्स, व्हाट इज फंक्शंस। सो बारी बारी से इन बेसिक टर्म को जानने की कोशिश करते हैं। सो कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स दे हैव प्री-डिफाइंड मीनिंग्स। एग्जाम्पल क्या है? लाइक फॉर, while, if, else, true and many more। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब हम लोग वेरिएबल्स की ओर बढ़ते हैं। वेरिएबल्स क्या है? इट्स ए यूजर डिफाइंड, बेसिकली यूजर डिफाइंड है। ये हम लोग यूज करते हैं यूज टू स्टोर एंड एक्सेस वैल्यू। हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है? हम अपनी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, एक्सेस करने के लिए वेरिएबल्स को यूज करते हैं। ये यूजर डिफाइंड है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या है? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन that does some task. A sequence of instruction that does some task. Like example, max is a function, min is a function. In order to print something in a C language, printf is a function and many more. Yeah, so अब हम लोग header files की बात करेंगे. What is exactly is header files? सो सी प्लस प्लस फर्स्ट प्रोग्राम देखने से पहले हम लोग हेडर फाइल्स के बारे में देखते हैं। सो इन सी प्लस प्लस हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ये आपको एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना होता है आईओ स्ट्रीम। ये आपका हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स होता क्या है? वी यूज दिस हेडर फाइल्स इन ऑर्डर टू स्टोर द declaration, variable, function, classes, etc। ये जो हमारा है, ये क्या करता है? इसके अंदर हमारा डिक्लेरेशन ऑफ इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, ये डिक्लेरेशन ऑफ इनपुट आउटपुट। लाइक हम लोग सी प्लस प्लस में in order to take input we are using in order to take output we are using cout। header files typically should not contain function definition। code written in the header file is appended to our program when we compile our program। okay,
And during compilation, there is something like a preprocessor, like a this. So preprocessor has include. It's a preprocessor. So this preprocessor, what it does, it copies the code of a header file in our code so that things become declared before we use. So this is the beauty of the header file. You will see namespace. What it does, it's divide code into different logical groups. अभी इसे और आगे समझते हैं. So std namespace contains standard library function and types. सब किताबी लैंग्वेज है. So std namespace contains standard function and types. So advantages क्या है? Why we are using namespace std in our C++ program? So it divides the code into logical groups. अभी इसको आगे समझते हैं. ये क्या करता है? नेम कॉलिजन को अवॉइड करता है. Let us suppose we include a header file that has declaration of variable x. अब क्या होता है? And we also created a variable x. So here collision happens, but we can divide these variables into multiple namespaces. So अब हम लोग अपना C++ का फर्स्ट प्रोग्राम देखने जा रहे हैं. So C++ फर्स्ट प्रोग्राम हमारा कुछ ऐसा दिखता है. Has include IOStream, then using namespace std, then int main, then like print short, and return 0. Always keep in mind, whenever you are writing your C++ program, execution always starts from the main function. Execution of the program always starts from main function in any C++ program or in any C++ code. Always keep in mind, execution of a program always starts from the main function. We are using cout in order to print something in our console or monitor. What is your return statement? We are using return 0, like we are exit our program. So in further videos you can see that most of the time we are using a return statement in order to return something. So let's see and run this program in a compiler. या सो हम लोग अपना फर्स्ट C++ प्रोग्राम अपने इस कंपाइलर पे, ऑनलाइन कंपाइलर पे रन करते हैं. सो हैज include iostream using name space std int main. So here cout and our channel name. So here return 0. Now run this program and we are getting our output as CurriCode Scratch Tutorials. This is our channel name. So thank you so much guys. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, so please like, share and subscribe, and thank you so much guys.